हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ जेनेटिक्स, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मेंडल, कोरेंस, ब्रिजेस, बैटसन एंड पुनेट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, बैटसन एंड पुनेट ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटसन एंड पुनेट फाउंड द मॉडिफाइड डाई हाइब्रिड रेशियो 9:7 इन लेथायरस ओडोरेटस, पाइसम सेटाइवम, कुकुरबिटा पेपो, जियामेज। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इन लेथायरस ओडोरेटस बैटसन एंड पुनेट फाउंड द मॉडिफाइड डाइहाइब्रिड रेशियो 9:7। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपिटल CC स्मॉल PP क्रॉस स्मॉल cc कैपिटल PP विल प्रोड्यूस। कैपिटल CC कैपिटल PP कैपिटल CC स्मॉल PP कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल cc कैपिटल PP. So if we cross these parents, they will produce one kind of gametes, capital C small p in one and small c capital P in second. If we cross both, we will have capital C small c capital P small p as a progeny, और ऑप्शन C is करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मास्किंग इफेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स इज कॉल्ड एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, एलील, म्यूटेंट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, मास्किंग इफेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ जीन दैट इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर इज सेड टू बी एपिस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस, एलील, म्यूटेंट। हमारा सही आंसर है अगेन ऑप्शन ए, एपिस्टेसिस। अ जीन that inhibits the expression of another is said to be epistasis. हमारा अगला क्वेश्चन है, मिक्सिंग एंड रीशॉर्टिंग द जेनेटिक एलिमेंट बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज नोन एज मोनोहाइब्रिडाइजेशन, डाइहाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, mixing and reassorting the genetic element by protoplast fusion known as protoplasmic fusion. हमारा अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट who discovered that coupling and repulsion are two aspects of single phenomena called linkage is पैटसन, मेंडल, मॉर्गन, पुनेट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉर्गन discovered coupling and repulsion are two aspects of a single phenomena called linkage. In another way we can say linkage phenomena was discovered by Morgan. Our next question is, pairing of homologous chromosomes is called linkage, terminalization, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी,
pairing of homologous chromosome is called synapsis. हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल और जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन टू क्रोमेटिड्स, टू क्रोमोसोम्स, टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच टेट्राड, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच होमोलॉग। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रॉसिंग ओवर takes place between two non-sister chromatids of each tetrad. हमारा अगला क्वेश्चन है, which one of the following is called test cross? Dominant back cross, incomplete dominance, monohybrid cross, recessive back cross. So test cross is when we cross progeny with recessive parent. So D option is right, where recessive back cross is known as test cross. हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस इज 3:1, 1:1, 1:2:2, 9:3:3, 3:1। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस इज 1:1। So this is test cross ratio in case of monohybrid. Our next question is, monohybrid ratio is 1:1:1, 3:1, 1:2:1, 1:1. The correct answer is option B, 3:1 is monohybrid ratio. Our next question is, independent assortment take place in Mendel's experiment when chromosome pairing occurs, factor lie in different homologous chromosomes, factor lie in one and the same chromosome, factor duplicated in the chromosome. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, independent assortment take place in Mendel's experiment when factors lie in different homologous chromosome. Otherwise there will be problem of linkage, and which will be exception in this case. Next question is, the law of independent assortment is based on dihybrid cross, monohybrid cross, test cross, incomplete dominance. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, law of independent assortment is based on dihybrid cross. हमारा अगला क्वेश्चन है, इन जीन मैपिंग 1 मैप यूनिट इक्वल टू 1% क्रॉसओवर, 10% क्रॉसओवर, 50% क्रॉसओवर, 100% क्रॉसओवर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इन जीन मैपिंग 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% क्रॉसओवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीनोटाइपिंग रेशियो ऑफ हेटेरोजाइगस टॉल ऑफ F2 जनरेशन वुड बी। So heterozygous tall is T small t. Our options are 1:2:1, 3:1:2, 1:2:0, 1:1:3। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1। The genotypic ratio of heterozygous tall of F2 generation would be 1:2:1. Our next question is, in a cross between two individual pure for contrasting character of a pair, the character which is not represent in F1 generation is dominant character, recessive character, incomplete dominant character, intermediate character। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, recessive character is not represented in generation where two individual pure for contrasting character are getting crossed। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ
same gene responsible for determining contrasting character is? Supplementary gene, locus, allele, progeny. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, दे आर नोन एज allele. Allele, alternative forms of same gene which determining contrasting character. हमारा अगला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ एलील ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड? जीन, सिनेप्सिस, डीएनए, लोकस. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पोजीशन ऑफ एन एलील ऑन क्रोमोसोम इज लोकस. Two allelic genes are located on same chromosome, two homologous chromosome, sex chromosome, two non-homologous chromosome. और सही आंसर है ऑप्शन बी, two allelic genes are located on two homologous chromosome. हमारा अगला क्वेश्चन है, the other name for law of segregation is? law of unit character, law of purity of gametes, law of dominance, origin of species. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, law of segregation is also known as law of purity of gametes. हमारा अगला क्वेश्चन है, which one of the following is called law of purity of gametes? law of unit character, law of independent assortment, law of dominance, law of segregation. So this is repeated information. The correct answer is option D, law of purity and law of segregation, both are same. Our next question is, for independent assortment, Mendelian factors should lie in different homologous chromosomes, same chromosome, different non-homologous chromosomes, various chromosomes. Correct answer is option A, for independent assortment, Mendelian factors, or you can say gene, should be lie in different homologous chromosomes. और अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ segregation and independent assortment is possible when, only when factors lie in different homologous chromosomes, factors lie in different heterologous chromosomes, there is no pairing, there is no crossing over. Correct answer is option A, principle of segregation and independent assortment is possible when, only when factors or gene lie in a different homologous chromosome. Otherwise there will be linkage, and which will be exception of this law. The next question is, Mendel worked on pea plant called as Pisum sativum, Lathyrus odoratus, Dolichos labella, Ornithora lamarckiana. Or correct answer is option A, Mendel worked on pea called Pisum sativum. The next question is, Mendel published the result of his experiment in journal Genera Plantarum, Hortus Uplandicus, Flora Laponica, Transaction of Natural History of Society. So right answer is option D, Mendel published his result of his experiment in journal Transaction of Natural History Society. हमारा अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज? बैटसन एंड पुनेट, जेकब एंड मोनार्ड, मॉर्गन एंड कैस्टल, ग्रेगर एंड मेंडल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉर्गन एंड कैस्टल प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरेंट्स ऑफ ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड ऑफ A blood group, B blood group, AB blood group, O blood group. So when AB will cross, they will produce two kind of gametes, A, B. So they can form A blood group, they can form B blood group, or even they can form AB blood group. So in each case,
O blood group cannot be formed. So right answer is option D. Our next question is, sex-linked gene inherits in a fashion known as codominant, crisscross, lethal, random. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्स लिंक्ड जीन इनहेरिट्स इन अ क्रिस-क्रॉस फैशन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन कैरियोटाइप autosomes are divided into 6 groups A to F, 7 groups A to G, 8 groups A to H, 9 groups A to I. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. So in human karyotype, autosomes are divided into 7 group A to G. हमारा अगला क्वेश्चन है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, पुनेट स्क्वायर, डीएनए सीक्वेंसिंग, इडियोग्राम. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज इडियोग्राम. हमारा अगला क्वेश्चन है, साइंस ऑफ इम्प्रूविंग hereditary quality of future generation of mankind is genetics, eugenics, transgenics, euthenics. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, eugenics is a science of improving the hereditary quality of future generation of humankind. हमारा अगला क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 3:1, 1:2:1, 9:3:1, 1:1:1:1. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. सो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट रेशियो इज 1:1. In case of dihybrid, the test cross ratio is 1:1:1. और अगला क्वेश्चन है, एलेलिक frequencies of a large population remains constant if there is no selection, no migration, mutation or recombination. The principle is put forward by Charles Darwin, Hugo de Vries, Hardy Weinberg, Carl Linnaeus. The correct answer is option C. When allelic frequency of a large population remains constant if there is no selection, migration, mutation and recombination, was given by Hardy Weinberg. Our next question is, which one of the following cannot explain on the basis of Mendel's law of dominance? The discrete unit controlling a particular character is called a factor. Out of one pair of factors, one is dominant, other is recessive. Allele do not show any blending. Both characters recover as such in F2 generation. Factors occur in pairs. तो अपना सही आंसर है ऑप्शन सी. By Mendel's law of dominance, we cannot show that alleles do not show any blending. Both characters recover as such as in F2 generation. Our next question is, in Hardy-Weinberg equation, frequency of heterozygous individual represented by p square, 2pq, pq, q square. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. In Hardy-Weinberg equation, frequency of heterozygous is represented by 2pq. So p square is homozygous dominant frequency and q square is recessive homozygous frequency. The next question is, inheritance of blood group is example of sex-linked inheritance, multiple allelic inheritance, epistasis, polygenic inheritance. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. So inheritance of blood group is example of multi-gene inheritance.
Our next question is the different alleles of trait in a F1 hybrid separate at a time of gametogenesis and enter into different gamete. This is basis for law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, law of incomplete dominance. Our correct answer is option B. This is basis for law of segregation. In a F1 hybrid, so gametogenesis occurs and gametes enters into different gametes. So allele entered into different gametes. Our next question is pleiotropic gene is a gene evolved during Pliocene, controls a trait only in combination with another gene, controls multiple traits in a individual, is expressed only in primitive plant. The correct answer is option C, pleiotropic gene which controls multiple traits in an individual. Our last question of this video is a gene showing codominance has allele tightly linked on same chromosome, alleles that are recessive to each other, both alleles independently expressed in a heterozygote, one allele dominant on other. Correct answer is option C. A gene showing codominance, both alleles independently expressed in a both will have its effect on an individual, both will be co-expressed. So friends, thank you for watching the video. Please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.